So what is the next thing that you have to be looking at in BTC? Level 1 of allocation, right? लेवल 1 ऑफ अलोकेशन में ये आपका स्विंग लो थी, ये आपका स्विंग हाई था, ये आपका रिट्रेसमेंट पॉइंट, उसका टारगेट कंप्लीट हो चुकी है, राइट? एट द करेंट सिनेरियो, स्विंग लो, स्विंग हाई, रिट्रेसमेंट पॉइंट 1, swing low, swing high, retracement point number 2, right? And the major thing, swing low, swing high, retracement point. इतना ऑप्शंस है, कौन सा यूटिलाइज करोगे यहाँ पे? So for this, we'll do the screening. Okay. So come down to daily time frame. With the daily time frame, what do we notice? Bias point, internal liquidity point. In this point of range, what is market trying to do? Market is in the range. अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में मार्केट क्या करेगा, किधर तक मूवमेंट आएगी, कैसे मूवमेंट आएगी, व्हाट शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन? सिंपल है, जितना हमारा प्रीवियस डिमांड है उसे अलोकेट करो, राइट? जैसे ही वो अलोकेशन होती है उस अलोकेशन को डबल करो, जैसे ही इंड्यूसमेंट खत्म होती है प्लान को अलोकेट करो, राइट? वेयर इज द मार्केट टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ एक्शन, राइट? प्लान नंबर 1 खत्म हुई, अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू गाइस हैव टू बी वर्किंग ऑन? द नेक्स्ट थिंग यू विल बी वर्किंग ऑन इज 4 hours. What is 4 hours indicating? 4 hours is indicating a movement. First movement of action डालते हैं. Action number 1, post the inducement range completion, right? So अभी इस point of action में 3 movement allocate हुई है, right? इस point of action में तुम्हें 4 hours में ये पूरा allocation mathematical number के through मिलेगा ही नहीं, right? ये mathematical number आपको मिलेगा 1 hour पे, राइट? डेफिनेटली ये प्लान ऑफ एक्शन जो इधर इंड्यूसमेंट के साथ मूवमेंट आई थी, यस इसका मिलेगा, बट ये शॉर्ट ट्रेड का मिलेगा नहीं. उसके बाद जो यहाँ पे अलोकेट हुआ था लॉन्ग का, डेफिनेटली इसका मिलेगा आपको. बट मेजरली ये सब तो पुराना है, पुराना मैं क्यों बात कर रहा हूँ करके आप सोच रहे होगे. ओल्ड डेटा इज द न्यू डेटा, ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन में लेट्स अलोकेट द स्विंग हाई एज दिस वन, स्विंग लो एज दिस वन. ये ले लो या इसके ऊपर वाला ले लो, कोई भी ले लो, प्रॉब्लम नहीं है. ओपन द कैलकुलेटर एंड कैलकुलेट. ओके, स्विंग हाई इज 92,810.64 minus 84,667.03. What is the formulative number that I have got? The formulative number that I have got is 8143.61, राइट? जैसे ही ये नंबर मिलता है, रिट्रेसमेंट पॉइंट क्या है हमारा इधर? रिट्रेसमेंट पॉइंट इज 9100, डायरेक्शन बेरिश, माइनस. सो 9100 माइनस 8143.61, right, into 1.618. What is the number that we have got? The number we have got is 77,923. 77,923 is below the swing. ओके, एक लेवल ऑफ एक्शन मिल गया है, वो मार्क करके रख लो. अभी इस पॉइंट ऑफ एक्शन को सेम अलोकेशन के साथ हम यहाँ पे मूव करते हैं, राइट? जो कि हमारा मेजर पॉइंट है. तो उस मेजर पॉइंट के हिसाब से व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लुक फॉर? द नेक्स्ट थिंग विल बी लुकिंग फॉर 92,810.64 minus 87,836. What is the value? The value is 4
974.64, राइट। जैसे ही वो वैल्यू मिलती है, रिट्रेसमेंट पॉइंट 90,781.20 माइनस 4974.64, right, into 1.618. What is the value that we are getting? The value we are getting is 82,732. 82,732. Okay. So this was the first plan of action. I'm just marking it out. What will be the second plan of action? Retracement कहाँ पे है? 90,781.20 minus 4974.64 into 2. What is the value that I'm getting? 80,831. 80,831. I will mark out the number. Where is the market taking rejection from? From the 4 hours point of action, right? So we got a previous allocation, उसके बाद वाला allocation का अभी तक target hit नहीं हुआ है. So we will take under the consideration of first lineup. इस first lineup क्या completion every demand control को होते हुए मिली है. This is the first demand, right? Completion of it. Wick create हुई थी, double the quantity, 50% से market movement दिया है, correct? So with this point of action, rejection कितना आना चाहिए हमको यहाँ पे? जितना हमारा previous point of action है उतना rejection. ये हमारा previous point of action है. We got that rejection at this particular place. No worries at all. Wick create हो रहा है, problem ही नहीं है. But always remember one thing. Body completion हमें चाहिए वो retracement point of action में. Okay? तो अभी हमारा point of action यहाँ पे थी. With this point of action, 50% completion पे थी, correct? So अभी what is the next plan? जितना हमारा previous demand allocation था उतने का movement allocation यहाँ पे दिखने को मिलेगा, right? Market completed the range at this point. With this point of action, did we get an inducement? Yes. Inducement 1, partner 2, a group of small continuity, right? So in this plan of action, what is the next step that we'll be looking for? The next step we'll be looking for is the movement of this plan of action multiplying with the inducement range. Where is the market standing together? Market is standing near the point of action of 4 hours mathematical number, right? So with this point of action, what is the next thing that you will be working on? The next thing you will be working on is on the 1 hour concept, right? Everything is good, no doubt at all. राइट पूरा प्लान ऑफ एक्शन फॉलो करके आया है. सुबह में हमने बोला था बीटीसी आज ऊपर के लिए जाएगा क्योंकि संडे के दिन जितने भी लोग रनिंग में आए उनका एसएल हमें चाहिए. तो उसके लिए अभी हमें क्या करना चाहिए? टारगेट हिट हुआ है. पॉइंट ऑफ एक्शन 1, पॉइंट ऑफ एक्शन 2, पॉइंट ऑफ एक्शन 3, राइट. डू द मैथमेटिकल नंबर. एस्केप हाई पॉइंट 82,797.95 minus 80,000. What is the formulative number that we have got? The formulative number that we have got is 2797.95, right? With this plan of action, what is the retracement point? 81,151. Direction bullish, we will add 2797.95 into the golden ratio 1.618. What is the first plan of action that we are getting? 85,678. 670
8. Okay. So this is the plan of action of 1 hour. What is the next step that you will be working on? The next step you will be working on is जितने लोगों का ट्रेड मिस हुआ है वो लोगों का ट्रेड ऑफ एक्शन नेक्स्ट कहाँ पे होगा, राइट? सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ पे मैं इंटरमीडिएट रेशियो ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक फर्स्ट रेशियो ही कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? आई एम जस्ट कीपिंग इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ अलोकेशंस एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, उससे ज्यादा कुछ नहीं. देन कमिंग टू 30 minutes. What is 30 minutes indicating? 30 minutes is indicating a power allocation point. Power allocation point मतलब जितना भी वॉल्यूम सर्कुलेटिंग में रहती है उतना ही वॉल्यूम का लिक्विडिटी हंट होता है. इन द सिनेरियो ये हमारा सर्कुलेटिंग सप्लाई था, राइट? व्हाई इट वाज ए सर्कुलेटिंग सप्लाई? अगर नोटिस करोगे हर एक कैंडल में सिर्फ मेजर पोजीशन ऑफ अलोकेशन देखोगे ना, यहाँ पे सिर्फ सेलिंग हो रही थी. Selling, 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 right? Knowing in the point of action market was in the direction of bullish, but इस point of action में सिर्फ circulate हो रहा था एक one to another, right? One decentralized exchange to another decentralized exchange. अब इस point of action में क्या होगी market? Okay, complete हुआ. Post that completion of exchange, what did the market do? One shot में cover up किया. Post coverance मार्केट हैड टेकन ए रिजेक्शन. कितना रिजेक्शन लिया था मार्केट ने? जितना प्रीवियस अलोकेशन पॉइंट 1, अलोकेशन पॉइंट 2, राइट? सो हमारा मेजर दो अलोकेशन पॉइंट यहाँ पे थी. दोनों अलोकेशन पॉइंट कंप्लीट हुए, राइट? सो लेट्स लुक इनटू द सर्कमस्टांसेस जहां से रिजेक्शन ली, राइट? सो रिजेक्शन 1 and rejection 2. Market took an rejection from the same perspective angle. अभी कितना मार्केट कंटिन्यू करना चाहिए? जितना प्लान ऑफ एक्शन है मार्केट में उतना ही मूवमेंट अलोकेशन दिखने को मिलना चाहिए. वो कहाँ पे दिखने को मिलेगी? जैसे ही एक अलोकेशन आपको 15 मिनट में रिजेक्शन दिखते हुए दिखेगा उतना ही प्लान ऑफ एक्शन आपको मूवमेंट में दिखेगी. एंड हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट मूवमेंट? दैट मूवमेंट इज आइडेंटिफाइड थ्रू अ कैप्शन एनालिसिस. कैप्शन एनालिसिस मतलब 15 मिनट में जितना सर्कुलेटिंग है उतना ही सर्कुलेशन में मूवमेंट आएगा, राइट? दिस वाज द फर्स्ट सर्कुलेटिंग मूवमेंट, दिस वाज आवर सेकंड सर्कुलेटिंग मूवमेंट. इमीडिएटली देयर वाज अ स्पाइक इन द मूवमेंट. कितना अलोकेशन आना चाहिए इस पॉइंट ऑफ एक्शन में? जितना यहां से यहां तक बॉडी जो जनरेट हुई है ना, विक नहीं सिर्फ बॉडी, उतना ही मूवमेंट ऑफ अलोकेशन आपको बीटीसी में दिखने को मिलेगा. ओके. एंड इसमें फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन 50% एरिया will be the hike zone, 100% area will be the major liquidity creation zone. इस जोन पे लिक्विडिटी क्रिएट होगी, इस जोन पे रिट्रेस होगी. ओके. 2 पॉइंट ऑफ एक्शन इज बीन अलोकेटेड बट 1 आवर का हमारा टारगेट रेंज क्या है? 85,594. अभी जैसे ही वो लेवल ऑफ अलोकेशन हुआ, ये एमटीएसएल पॉइंट है, कंफ्यूज मत होना, ये एमटीएसएल का लाइन है. ओके. सो जैसे ही ये पॉइंट ऑफ एक्शंस अलाइन हुई हैं, what is the next thing that you guys have to be looking here? The next thing you guys will be looking here for a rejection perspective. And वो rejection perspective कहाँ से मिलेगी हमें? Use the math. Retracement 1. So I'm talking about small rejection, not the big rejection. Sorry, swing low, swing high, retracement point. Okay.
फर्स्ट ये कर लो, उसके बाद नेक्स्ट। 82,461.53 minus 81,630.59. What is the formulative number? The formulative number is 830. Okay, 82,065.73 plus 830.94, right, into 1.618. 83,410 is the first plan of action. Hit हो चुकी है, intermediate number डालो, 82,065.73 plus 830.94 into 2, 83,727. Where is the market taking rejection from? So this is the current plan of action of BTC. What market will tend to do? Market will tend to hunt down, take the liquidity, grab the creation, continue, hunt the retailers, and then the move. This is the plan action of BTC at the current stage. पहला शॉर्ट होगा, शॉर्ट होने के बाद फिर से एक हंट डाउन होगी, उस हंट डाउन के साथ मूवमेंट ऑफ अलोकेशन आपको दिखने को मिलेगा। क्लियर है गाइस? In BTC, on a higher time frame of 4 hours, the higher time frame of 4 hours, our downside target is still not hit, but on the lower time frame we are bullish, but our major bias should be for short trade on completion of the previous supply plus the volume allocation, right? मतलब यहाँ पे नीचे जाने के लिए भी उतना ही सरप्लस चाहिए, राइट? जितना सरप्लस कंटिन्यूटी में मिलेगा उतना सरप्लस में ही मूवमेंट अलोकेट होगी, राइट? ना उससे ज्यादा ना उससे कम। कीपिंग इन माइंड, राइट, हमारा 4 आवर्स का मेजर अलोकेशन, राइट, अगर मैं पॉइंट ऑफ एक्शन यहां से लेता हूं ना, राइट, सो इस पॉइंट ऑफ एक्शन में दिस वाज माय हाई, दिस वाज माय फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट। जब फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट ही कंप्लीट नहीं हुआ है, व्हाई विल आई लुक फॉर द सेकंड पॉइंट ऑफ एक्शन, राइट? अगर मेरा फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट यहाँ पे ब्रेक होती है, तब जाके मैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन का ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाऊंगा ना, उससे पहले आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो एट द करेंट सिनेरियो मेरे को संडे का जितना भी लोग यहाँ पे रनिंग में बैठे हैं ना, उनको आउट करना है, अगर मूवमेंट अच्छे तरीके से चाहिए तो, राइट? सो दिस इज वन। सेकेंड थिंग, शॉर्टर टाइम फ्रेम में हमारा बयासनेस लॉन्ग की तरफ क्यों है? क्योंकि इस पॉइंट ऑफ एक्शन में जितना हमारा प्रीवियस सप्लाई वो कंप्लीट होते हुए आई है, राइट? उस पॉइंट ऑफ एक्शन में आज के दिन में, आज के दिन क्या, कल के नाइट 8:30 से ही मार्केट ने यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बिल्ड करके शुरू होके आज का दिन यहाँ पे ओपनिंग दी थी, करेक्ट? इस पॉइंट ऑफ एक्शन में व्हाट इज द वन मेजर थिंग दैट यू विल बी नोटिसिंग? सुबह में क्या बोला था? मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेके लॉन्ग के तरफ ही जाएगा, करेक्ट? सो व्हाई? बिकॉज जो कल के दिन में जितने भी रनिंग में है ना, उन लोगों को निकालना है पहला। मार्केट इतना आसान तरीके से पैसे नहीं देगा, तो उनको निकालेगा पहला, निकालने के बाद अलोकेट होगा। डायरेक्ट अलोकेशन होता है, देन इट विल बी ए ब्लड बाथ इन द मार्केट, राइट? उसके लिए लिक्विडिटी चाहिए, सरप्लस होना चाहिए, राइट?
सरप्लस लिक्विडिटी जनरेट होना चाहिए। सरप्लस लिक्विडिटी कहाँ पे जनरेट होता है? सरप्लस लिक्विडिटी गेट्स जनरेटेड ओनली व्हेन देयर इज अ सर्कुलेटिंग सप्लाई। ओके, सर्कुलेटिंग सप्लाई जब जनरेट होती है, राइट, through a decentralized to decentralized exchange, that's when there will be a plan of action which will get changed. Okay, that's when the circulating supply gets increases, CS. When the CS gets increased, that's when the movement in single candles will be in 1,000 points. Up, down. Okay. Till that point of action, we will not be looking for any other plan of actions. 4 आवर्स में हमारा टारगेट हिट हुई है फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट का, सेकेंड रिट्रेसमेंट पॉइंट का हिट नहीं हुआ है। वो कब हिट होगा? जब फर्स्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट ऑफ 4 आवर्स ब्रेक होगी, जो कि इन दिस सिनेरियो इज दिस वन 80,000 जब ब्रेक होगा, तब जाके हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होगा। Anyone has any doubts? Hit the like button, guys. All the new members, welcome to the stream. If you're learning, if you're getting educated through the markets, do hit a like, share, and subscribe. $600 short from MC2 range in BTC. ज्यादा कंफ्यूज मत करना खुद को। ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये सेटअप को आइडेंटिफाई करना, नथिंग मोर देन दिस। ओके, 1, 2, 3, this for bullish markets, 1, 2, 3, this for bearish markets। ये दो जहां जहां पे दिखता है तुम्हें, वहां वहां से मार्केट रिवर्सल होगा 1 आवर पे। ओके, these are the only two things you required to work on to identify reversal zones in BTC, nothing more than that। जहां जहां पे तुम्हें त्रिशूल दिख रही है, that are the plan of actions where you will be look for a trade। 1, right, 2, 3, I'm talking reversals, huh? Only reversals, 4, जहां जहां पे आपको त्रिशूल दिखेगा, make sure that that are the points where the market will reject from। 5, okay, so understand the external liquidity points and allocate it। 6, every reversal area you will find an external liquidity zone, with that external liquidity zone you can allocate the trades accordingly। Beautiful, guys, almost target hit, TP1 almost hit होने वाला है, which is 81,200। Always remember where the liquidity is sitting।
And where exactly the market is taking the rejection was a mathematical number which is 83,771. Through that point of action, market took an rejection. From that point of action till now, the market has given a break nicely with the movement allocations of 2,500 points. Everyone's target is hit. Solana target hit, gold target hit, BTC target hit. A BTC yet to break. If it breaks, we will extend our demand to 150%. On the break, we will extend it to 150% for the targets, guys. MTSL 2000 points plus. 3,950 points running, sir. MTSL at 3,000.